Hello everyone, this is your Reena ma'am and welcome to my channel. Today we are going to do exercise 3.3 question number 2. So this is class 10 maths. Let us start with the question. Solve 2x plus 3y equal to 11. Yes, this is given in the question. Solve 2x plus 3y equal to 11 and 2x minus 4y is equal to minus 24, and hence find the value of m for which y equal to mx plus 3. Okay, for doing so, what you need to do, so we have to find out the solution of this equation first. So let's use substitution method. हमने इस exercise में substitution method किया है. So we will take the value of x from here, that is 11 minus 3y upon 2, and put this value in the second equation. This is our second equation. So second equation is 2x minus 4y equal to minus 24. So it will be 2 into 11 minus 3y upon 2. ये हमने वैल्यू रखी x की, एंड देन रेस्ट थिंग विल बी सेम. बाकी सभी कुछ सेम रहेगा. 2 से 2 हुआ कैंसिल. वी गेट 11 माइनस 3y माइनस 4y is equal to minus 24, and that will be equal to, yes, that will be equal to 11 minus 7y, या हम डायरेक्ट लिखते हैं माइनस 7y इक्वल टू माइनस 24 एंड माइनस 11. माइनस 7y विल बी minus 35, and this implies y equal to minus 35 divided by minus 7. Once you cancel it, you get 5. So value of y will be 5 from here. When you put the value of y in this part, then you will get the value of x. So let us find that 11 minus 3y upon 2. We have y is equal to 11 minus 3y upon 2. Sorry, x equal to 11 minus 3y upon 2, where value of y is equal to 5. So it will be x equal to 11 minus 3 into 5 upon 2. So value of x will be 11 minus 15 upon 2. That will be minus 4 upon 2. Once you cancel it, you get 2 ones are 2 and 2 twos are 4. So yes, x will be minus 2. Now we get y is equal to 5 and x equal to minus 2. अब इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में पुट करनी है. सो लेट अस सी कि हमें फाइंड क्या करना है. वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m फ्रॉम हेयर. सो लेट्स पुट y इक्वल टू 5 हेयर. सो जब हम यहाँ पे y की वैल्यू 5 पुट करेंगे, देन इट विल बी 5 इक्वल टू m इंटू माइनस 2 प्लस 3. सो वी कैन से 5 minus 3 is equal to minus 2m. So we can say 2 equal to minus 2m, and value of m will be minus 2 upon 2. Then 2 will be cancelled out. Yes, you can get minus 1. So from here we get that value of m is equal to minus 1. Right? So we have done this question number 2. मतलब आपने क्या करना है, पहले क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए एक्स वाई की वैल्यू आपने फाइंड की, उस वैल्यू को आपने गिवन इक्वेशन में पुट किया, एंड देन यू गेट द वैल्यू ऑफ m फ्रॉम हियर. ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सेकेंड क्वेश्चन.
So we have done second and third question में क्या given है, difference between two numbers is 26, one number is 3 times the other, find them. Means हमें equations पहले form करनी है. Form the pair of linear equations for the following problems and find their solution by substitution method. Substitution method हम तब लगाएंगे जब हमें equations पता होंगी. So let us find the equations first. The difference between two numbers is, what is given here? See, difference between two numbers is 26. So yes, we can take two numbers are x and y and their difference is 26. So one equation will be this, then other one number is 3 times the other, then I can say that x equal to 3y. Okay, one number is 3 times the other, so the second equation will become like this. So we can say this is our first equation and this is our second equation. Let us solve this equation. So we will find the value of x from the second equation. So it will be x equal to 3y and we will put this value in the first equation. So our first equation is x minus y equal to 26. So put the value of x as 3y, then it will be 3y minus y equal to 26, or we can say that 2y equal to 26. Then let's find the value of y from here. Y is equal to 26 divided by 2. Okay, so we can say 2 ones are 2 and 2 13s are. So the value of y from here will be 13. Now we can put the value of y here, x equal to 3y. ये थी ना इक्वेशन, इसमें हमने पुट किया y की वैल्यू 13, then value of x is 39. So what is the final answer? Hence we can say, hence required numbers are 13 and 39. 13 and 39. So we have done question number 3 first part. Let us see what is given in the second part. So in our second part, the larger of two supplementary angles. So अगर यहाँ पे two supplementary angles हैं, so we can say, let us say angles are x and y, and if they are supplementary, so x plus y will be 180 degree. This is our first equation. Okay, this is our first equation. And और क्या दिया है, larger of two supplementary angles exceeds the smaller by 18 degree. Means अगर मैं लेती हूँ कि x larger है, उसमें से मैंने स्मॉलर को लेस किया तो 18 आएगा, क्योंकि x y से मीन्स दूसरे एंगल से 18 डिग्री ज़्यादा है. ठीक है, सो x माइनस वाई इक्वल टू 18. देन फाइंड देम. सो लेट अस सॉल्व दीज इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y सेपरेटली. सो वंस वी सॉल्व दीज इक्वेशन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे, y प्लस 18 हो जाएगी, और उस वैल्यू को हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है. So first equation is x plus y equal to 180 degree, right? So we will put y plus 18 instead of x. So it will be 2x is equal to 180 minus 18. So once you subtract and get the answer, you get 2y is equal to 162, and the value of y will be 162 divided by 2. So 2 ones are 2, 2 eights are and 1s are. Here the value of y will be 81 degree, and when we put the value of y here, x equal to y plus 18 था, so yes we can get the value of x from here. Y plus 18, that means 81 plus 18, so it will be 99 degree. So from here we can say that the required angles are,
So required angles are, क्या क्या एंगल्स आ गए, 99 and 81. Okay, so these are the angles. We have done question number 3, second part, and let us see what is given in the next part. So in question number 3, इसमें थर्ड पार्ट में दिया है कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल. तो हम यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ पे 7 बैट, एक बैट की कॉस्ट है x, तो 7 की कॉस्ट होगी 7x. ऐसी एक बैट की कॉस्ट अगर y है, 7 की कॉस्ट होगी 6y. इनकी टोटल कॉस्ट आपको गिवन है 3800. सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. देन लेटर शी बाइज 3 बैट्स, सो इट विल बी 3x and 5 balls plus 5y, and the total cost is 1750. Now find the cost of each bat and each ball. So we have to solve this equation and then find the value of x and y by the similar way. Substitution method से ही हम इसको solve करेंगे. So let's solve it. So we will solve this by using substitution method. तो substitution method के लिए आपने यहाँ से x की value निकाली and we will put this value in the first equation. So what is our first equation? In our first equation this is given, so I am putting the value directly from here. 7 into 1750 minus 5y upon 3 and plus 6y equal to 3800. Let me write this equation one more time to solve it. So let us solve this equation. Once you multiply 7 by 1750, you get 12,250 minus 7 5s are 35y, right? Then divided by 3 plus 6y is equal to 3800. Next step, this 3 will be multiplied by this, so we get 12250 minus 35y and plus 6 3s are 18y divided by 3 equal to 3800. ये 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में एंड वी गेट 12250. इन दोनों को सॉल्व किया, माइनस 35 एंड प्लस 18, इट विल बी माइनस 17y. Here I can write 3800 into 3. So we get minus 17y is equal to, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आया है, yes, 3 0 0 3 8 24 2 3 9 11. ओके, और इसको अगर हम शिफ्ट करके उधर लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 12250. सो माइनस 17y इज इक्वल टू, इन दोनों को माइनस किया एंड यू गेट माइनस 850 फ्रॉम हेयर, राइट? सो नाउ वी कैन से y इक्वल टू माइनस 850. स्पेस नहीं है लिखने की. आई रिपीट वन मोर टाइम, माइनस 850 एंड डिवाइडेड बाय something happened. Minus 850 divided by minus 17. Okay, this is the value of y. So once we cancel, we get 17 5s and 0. So value of y from here is 50. और अब इस वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे? अब हम इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे जो हमने x की वैल्यू निकाली थी. सो येस, वी कैन से दैट कि y की वैल्यू 50 है एंड व्हेन वी पुट दिस वैल्यू हेयर, एज वी हैव x इक्वल टू 1750 माइनस 5y अपॉन 3. सो लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ x हेयर. सो ये हो जाएगा 1750 माइनस 5 इंटू 50 एंड डिवाइडेड बाय 3. ओके,
So it will be 1750 minus 250 divided by 3, and this implies value of x will be 1500 divided by 3. Once you cancel it, it will be 500. So we can say that value of x will be 500. So x किसकी cost थी? Cost of bat. Hence cost of bat is rupees 500, and cost of ball की cost कितनी हुई? rupees 50. Okay, so we have done third part of the question. Now, so if you like the video, subscribe this channel. In this channel you will get all the solution of NCERT book, and press the bell icon so that you will get all the notification of upcoming videos, and don't forget to like the video. Thank you so much for watching.